रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। वर्कफ्लो में अगर हम लोग ने आई सेंड अ मेल टू यू, मेरे स्क्रीन से आई एम सेंडिंग ए मेल, लेकिन सेंड करने के बाद वो मेल आपको मिल जाती है। यू लॉग इन विथ यूर यूजर आईडी। मेरी यूजर आईडी अलग है, आपको यूजर आईडी अलग है। इन यूर यूजर आईडी, इन यूर इनबॉक्स यू सी दैट मेल, करेक्ट ना? मेरे स्क्रीन से आई सेंड अ मेल यूजिंग माई लॉगिन आईडी, लेकिन वो मेल आपको इट गेट्स डिस्प्लेड। तो डेटा moves from my screen, my login ID to your screen, your login ID, और सेम login ID एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से वो डेटा मूव हो रही है, फ्लो हो रही है, राइट? फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। वाटर फ्लो, एयर फ्लो बोलते हैं ना। सो डेटा एक जगह से दूसरी जगह को मूव होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फ्लो। गुड, वेरी गुड। एंड आप हम लोग ने ERP देखने वाले, राइट? हम एक आईडी से कितने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? somebody is asking, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। अगर हम लोग जूम से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? जूम से कनेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन कनेक्ट, एक जूम पे मैक्सिमम 100 लोग कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? हमारे पास जोहो है, जोहो सेम लाइक जूम, हमारा ये जूम आईडी में up to 500 people can connect. So it depends upon the application. It's not fixed. Okay. Now let me share my screen. Today is an important topic. It is called ERP, Enterprise Resource Planning. पहली वर्ड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब क्या है? एंटरप्राइज मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करना है, बहुत ऑफिसेस होना चाहिए, बहुत प्रोडक्ट्स होना चाहिए। इंडिया में you name some big companies, एंटरप्राइज छोटा कंपनी नहीं था, एक ही ऑफिस, एक ही सिटी, ऐसा वाला कंपनी हमको नहीं चाहिए। 100 ऑफिसेस या 1000 ऑफिसेस पूरी इंडिया में उनका ऑफिसेस है, लाइक दैट। कैन यू नेम सम कंपनीज इन इंडिया? TCS, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, करेक्ट, राइट? और ये तो TCS, तो Sir, एक also we TCS, can include banks. ICICI Bank, SBI, Airtel, Reliance, very good. Then IBM, Bajaj, Vivo, TCS, Telco, correct? Yes, sir. They have multiple offices. That means multiple offices, multiple locations, lot of people working. This is called the enterprise. Resource मतलब क्या है? अभी let us say टाटा मोटर्स या हीरो होंडा, अशोक लेलैंड, ये तो ये बहुत बड़ा कंपनी है ये सब। ना उनके लिए क्या रिसोर्स क्या चाहिए? रिसोर्स मतलब उनका रॉ मटेरियल और मटेरियल क्या चाहिए। अशोक लेलैंड के लिए क्या मटेरियल चाहिए?
अशोक लेलैंड तो ट्रक्स और बसेस दे क्रिएट दैट। स्टील मतलब रॉ स्टील चाहिए तो या कौन सा स्टील चाहिए? रॉ स्टील उनको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अशोक लेलैंड टू मेक ट्रक्स, ट्रक क्रिएट करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको क्या चाहिए? जस्ट रॉ आयरन नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेलैंड इसको engine parts like pistons, gaskets, right? Engine cover. Then someone should make horn, someone should make doors, someone should make truck body, piston, right? Tires, brakes, accelerator, battery, wiper, glasses, front glass, right? Iron bars, tire rim, ये सब पार्ट्स है। अशोक लेलैंड टायर नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो डनलप या एमआरएफ से खरीद रहा है। अशोक लेलैंड डजंट मेक हॉर्न्स, अशोक लेलैंड डजंट मेक द पार्ट बॉडी, लेकिन वो सब असेंबल करता है। अशोक लेलैंड ग्लासेस को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, किधर से कुछ कंपनी से वो खरीद रहा है। सो जो टायर सप्लाई करता है, वो जो बैटरी सप्लाई करता है, जो वाइपर सप्लाई करता है, इनका नाम सप्लायर, also known as वेंडर। वेंडर मतलब उनसे हम लोग कुछ खरीदना है। जो सप्लाई करता है उसको सप्लायर बोलते हैं। सो पार्ट्स तो मटेरियल है, रिसोर्स है। और क्या रिसोर्स है? व्हाट अदर इज रिसोर्स फॉर अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स? सेफ्टी बेल्ट, वेरी गुड। Safety belt, somebody said mirror, very good, yes, mirror, safety belts, yes, very good. ये सब पार्ट्स है, फिजिकल पार्ट्स, लाइट्स, करेक्ट, वो इंडिकेटर, सब कुछ पार्ट्स है। वो पार्ट्स जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर है। नाउ ये सब मटेरियल, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। और क्या रिसोर्स है? रिसोर्स मतलब समथिंग दैट आई यूज, एनीथिंग दैट, हाँ, डीजल भी, सॉफ्टवेयर भी, करेक्ट। पर्सन्स भी चाहिए सर जो उनको असेंबल कर सके उस पार्ट्स को। क्या क्या सर पर्सन्स चाहिए, डिफरेंट लेबल्स के उन पार्ट्स को असेंबल करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स, करेक्ट। इसीलिए पर्सन्स, पीपल, इसीलिए हम लोग ने ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। पीपल चाहिए, सब इंडस्ट्रीज को पीपल चाहिए, सब इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और टाइम, यू नीड हैव टाइम, राइट? ये सब रिसोर्स है। ये सब रिसोर्स हमको मिलती है, मिलते हैं, लेकिन हाँ, या गो अहेड, कैन यू, यस। टाइम हाउ कैन आई कैलकुलेट इट इन रिसोर्सेज? अगर आपको एक काम दिया तो ये टायर को, ये ट्रक को फिक्स कर लो, राइट? ये ट्रक में फिक्स करना पड़ेगा, उसके लिए एक आदमी चाहिए, फिटर चाहिए। वो फिटर के लिए कितने देर में वो फिट करना है? आधा घंटा में या एक दिन चाहिए फिट करने के लिए? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। ट्रक में कितने टायर होता है? सर अकॉर्डिंग टू ट्रक एक टायर को फिक्स करने में सर हाफ एन आवर में भी हाफ अ लगता घंटा। देयर आर ट्रक्स विथ इवन 16 टायर्स, करेक्ट?
एकदम लंबी ट्रक्स है ना, वो 16 टायर्स फिक्स करने के लिए उसको जैक चाहिए और हेल्पर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, राइट। उनको टारगेट देना पड़ेगा, आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ले लो, लेकिन 4 बजे हम लोग आकर इंस्पेक्ट करेंगे, 4 बजे ये ट्रक रेडी होना चाहिए। वो टाइम अलोकेट करना है। वो टाइम कौन अलोकेट करेगा? वो फिटर को कौन टाइम अलोकेट करेगा? Sir, the person which will above than him. मैनेजर और सुपरवाइजर, Yes. राइट। Yes, sir. तो टाइम अलोकेट करना है। अलोकेट करने के बाद ओके 4 बजे तक ले लो, 2 बजे तक वो कुछ भी काम नहीं किया, 2 बजे शुरू कर रहा है, क्या होगा? 4 बजे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो Yes, sir. इसीलिए 9 बजे काम दिया, 11 ओ क्लॉक आकर एक बार पूछेगा वो अभी क्या स्टेटस है, 2 टायर फिक्स किया, 1 टायर फिक्स किया, टायर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या जैक में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारा हेल्पर किधर है, ये सब कोई तो पूछना है, स्टेटस। सो टाइम अलोकेट करना है, बाद में ट्रैक प्रोग्रेस, काम हो रहा है क्या नहीं, ठीक से हो रहा है क्या नहीं, वो तो ट्रैकिंग करना है। ट्रैकिंग इज मैनेजमेंट। सो टाइम हम लोग को इनविजिबल है, हम लोग टाइम को देख नहीं सकता, लेकिन काल देव जस्ट कीप्स ऑन मूविंग। सो इसीलिए टाइम अलोकेट करना है, टाइम को ट्रैक भी करना पड़ेगा, राइट। सो टाइम इज ऑल्सो ए रिसोर्स। रिसोर्स मतलब हम लोग टाइम को भी कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। देन प्लानिंग। प्लानिंग मतलब व्हाट इज नीडेड, when is it needed, right? How many or how much needed, who is needed, कौन चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने चाहिए, right? When is it needed, आज ही चाहिए या कल चाहिए या परसों चाहिए और नेक्स्ट मंथ चाहिए। इफ अशोक लेलैंड 1 लाख गाड़ी मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या चाहिए? 1 lakh into 6 tires, 6 lakh tires, 6 lakh rims, 1 lakh into 2 wipers, 1 lakh into 2 glasses, 1 lakh engines चाहिए, right? But 1 lakh engine मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या खरीदने के लिए टाइम भी चाहिए। आपका सप्लायर उनके पास सब कुछ रेडी नहीं है अभी, आज बोलेगा तो उन लोग ने 1 हफ्ते के बाद उन लोग ने दे सकता है। सो प्लानिंग मतलब when, what, how, who, ये सब प्योरली मैनेजमेंट एक्टिविटी। एक बड़ा वाला कंपनी को क्या चाहिए, कब चाहिए, प्लानिंग एंड every resource they should plan. This is called ERP. आप अभी एक सर्च कर लो दुनिया में, हाँ, where is needed, this is very good, I think Rishika, I think I forgot to mention that, where is it required, right? क्योंकि अशोक लेलैंड का फैक्ट्री इतना, चेन्नई में एक फैक्ट्री है, होजूर में एक फैक्ट्री है, अगर वो सप्लायर बैंगलोर में सप्लाई करेगा तो उसमें फायदा नहीं है। सो वेरी सीनियर, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। नाउ I was asking a question. Now you do a search in the in Google, ERP सॉफ्टवेयर क्या क्या है, नाम बोल दीजिए, just few names in ERP. Can you search for ERP names? I am not going to do, you have to tell me, search and then tell me.
मैं वेट करूं. Tally ERP, very good. Tally ERP. और Odoo, SODOO, correct, that is also ERP. NetSuite, yes. NetSuite or NetSuite. ERP next. ERP next, SysPro. और क्या है? SysPro. Then what else? Epicor, correct, yes. Software Dynamic SAP, 365. SAP Business One, SAP, yes, that's a Meta, NetSuite, ERP, CRM, right? Oracle, yes. दुनिया में there are two people. Oracle, right? Oracle ERP और SAP ERP, right? Microsoft ERP, ये तीनों सबसे बड़े ERP. Put together, they are there in most of the big companies. You name Walmart, or you name American Express Bank, or you go to an oil company in Saudi Arabia, they may be using one of these. And next level, you are seeing NetSuite or I think these are all the next level. Okay, NetSuite, Odoo, Ramco, right? ये सब available है. ERP क्या करता है? We need to see one after the other, and because the fundamental thing, right? The fundamental thing in software is only a supporting tool. मेरे पास सॉफ्टवेयर है, लेकिन with software alone I cannot run the business. To run a bank, you need to have business. You need to have branches, you need to have managers, you need to have checkbooks, you need to have ATM machines. But software is essential. Software के बिना भी business चलेगा. लेकिन if you use software, you can do business efficiently. But just with software alone, business nahi chalega. So software is only a support. Now, business is key. Business requires software. You need to understand business. First हम लोग को business में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए. हम लोग को business जानते हैं तो we cannot do software for that. Business में क्या हो रहा है? In most of the big companies, okay, ये एक बात बता दीजिए. UP college or DW college, right? और एनी अदर कॉलेज, वाराणसी में जो भी कॉलेज है, कॉलेज का फंक्शनैलिटी क्या है? कॉलेज में क्या होता है? द वे कॉलेज रन्स सेम है ना. सब कॉलेजेस में डिपार्टमेंट है, सब कॉलेज में HOD, प्रिंसिपल, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, लैब्स, classes, theory classes, practical classes, assessment, assignment, monthly revision tests, model exams, then semester exams. One semester, second semester, then arrears, backlogs, fees payment, hostel, ये सब सेम है ना. वाराणसी में एक कॉलेज और Yes, sir. चेन्नई में एक कॉलेज, क्या डिफरेंस होते हैं? Infrastructures उनके सर. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिफरेंट, मे बी वो बिल्डिंग, इसमें एक कॉलेज में 100 बिल्डिंग्स है, दूसरी कॉलेज में 120 बिल्डिंग्स है. ये तो 3 स्टोरीज है, उधर 4 फ्लोर्स, समथिंग लाइक दैट.
लेकिन तो टीचर्स कॉलेज हो सकती है। टीचर्स का क्वालिफिकेशन स्लाइटली, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस BSc मैथमेटिक्स, BSc फिजिक्स और BSc केमिस्ट्री इन वाराणसी वर्सेस तमिलनाडु में BSc फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है? ऑफ कोर्स टीचर्स एफिशिएंसी, जो एक टीचर तो एकदम जबरदस्त टीच करते करेगा, दूसरे टीचर विल नॉट बी टीचिंग दैट एफिशिएंटली। सिलेबस में क्या फर्क है, वो प्रोसेस में है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन को देन स्क्रूटनी करना है। Sir, voice is not coming and the screen is also not sharing. को मेरे आवाज सुन रही क्या? यस सर, अब वॉइस आ रही है। ओके, नाउ इसमें क्या डिफरेंस है? 95% सेम या 95% डिफरेंट? 95% सर सेम ही होगा। सेम होगा एंड सर। नाउ इंडिया में एक आर्ट्स कॉलेज है, यूएस में एक आर्ट्स कॉलेज है, क्या डिफरेंस है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में और एडमिशन प्रोसीजर में? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम वे वाराणसी में एक होटल है, तमिलनाडु में एक होटल है। वो होटल रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना है, खाना को सर्व करना है, खाने के बाद बिल देना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा, बिल कैश या क्रेडिट कार्ड में देना है। इसमें क्या डिफरेंस है? एनी डिफरेंस? नथिंग। वाराणसी में एक बैंक SBI, ओके, और तमिलनाडु में एक बैंक सिटी यूनियन बैंक। दोनों में विथड्रॉल करना है, अकाउंट खोलना है, अकाउंट बंद करना है, चेक लेना है, या डिमांड ड्राफ्ट लेना, या लोन अप्लाई करके लेना है, क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट सेम, राइट? So same sector or industry, process is 90 to 95% same across India or world. और इंडिया में एक दुकान है, दुबई में एक दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है, यूएस में एक दुकान है। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले, ये सब सेम ही है। लाइक दैट ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में, ऑटोमोबाइल कंपनी श्रीलंका या मलेशिया में रहता है, एक हॉस्पिटल इंडिया में या एक हॉस्पिटल सिंगापुर में, प्रोसेस सेम। 90 to 95%, okay, 90, let us not forget about 90, at least 80% the same, 20% different. मैं क्यों 80 और 20 लिया पता है क्या आपको? There is a rule, 80-20 rule will hold good. What is that 80-20 rule? आपको कितने फ्रेंड्स है? How many friends you have? You may have at least 200 friends, right? Or 300 friends, or नहीं, somebody said विपिन ने बोल रहा है 10, सिर्फ 10 फ्रेंड्स है क्या बचपन से आज तक? सिर्फ 10 फ्रेंड्स या मोर? नो सर। कितने कितने फ्रेंड्स आप आपको? 100 हो सकता है एटलीस्ट। No, I am not asking about 10 या 20 friends. You will be interacting daily, right? About 100 or about 50,
यू मे नो 50 पीपल, लेकिन हर दिन 50 फ्रेंड्स को मिलते नहीं हम लोग। 50 फ्रेंड्स से हम लोग बात करते नहीं हर नो दिन। सर। आपको 50 फ्रेंड्स मालूम है तो, लेकिन कितने फ्रेंड्स से हर दिन आप लोग ने कनेक्शन में बात करते हैं? मे बी मैक्सिमम 10, करेक्ट? अब मे बी मैक्सिमम 1 or 2 तो डेफिनेटली है, लेकिन मैक्सिमम 5। सो इफ यू डिवाइड लाइक दिस, नाउ आपको हर महीने के लिए कितना पैसा चाहिए? So, आपको 100 फ्रेंड्स है तो मैक्सिमम यू विल बी डीलिंग विथ ओनली 20। दिस दे मेड a big research across the world, only with 20% will be moving. Now per month I will ask you, how much do you need, how much money you need? कितने पैसे चाहिए एक महीने के लिए? 6,000, ओके। मिनिमम 1000। पूजा को 6,000 चाहिए, सेजल को 6,000 चाहिए, कुमार मंगलम बोल रहा है 10,000, विपिन ने बोल रहा है 5,000, ठीक है ना? कुमार को हम लोग ने 10,000 रुपीज दे रहे हैं हर महीने, ओके। इन 10,000 क्या क्या खर्चा होता है? कितने कितने खर्चा होता है? कैन यू टेस्ट टाइप, और नाउ आई विल enable your mic, कुमार, आई विल enable your mic, बात कर दो। 10,000 हम आपको मैं दे दिया, कैसे स्पेंड करने वाले ये महीने में वो 10,000 को? कुमार, एनी आइडिया? सर 50,000 डिफरेंट बांट कर सकते हैं। हाँ ना, 10,000 रुपीज में दे दिया। 10,000 में क्या क्या खर्चा करने वाला है? सर डेली ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 100 रुपये पर डे खर्चे होते हैं। सो एक मिनट, 10,000 रुपीज, सॉरी 10,000 पर मंथ, इसमें 100 रुपीज पर डे, 26 days, राइट? जैसे 25 days, 2,500 इन लोकल ट्रैवल में हो जाती है। और नेक्स्ट, और सर ईट के लिए पर डे 15 रुपीज पर डे। किसके लिए? ईटिंग के लिए ईटिंग 10-15 रुपीज में क्या 3 चाय मिलेगा मैक्सिमम? 50 50 50 50 रुपए हैं। 50, ओके। सो 50 मतलब अगेन 30 days 1,500 फूड, राइट? व्हाट एल्स? और सर हेल्थ मेंटेनेंस में भी खर्चे होते हैं। हाँ, हेल्थ मेंटेनेंस क्या? हाइजीन, सोप, सीप, शैम्पू, मेडिसिन, राइट? यस सर। कितना? 1,000। 1,000 on health grounds, okay, fine. R और plus 1, 5,000, रिमेनिंग 5,000। अगर रिमेनिंग 5,000 के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे तो अगले महीने से मैंने आपको सिर्फ 5,000 ही दे दूं। और सर 5,000 के लिए आप लोग ने, यू हैव गिवन मी द एक्सपेंस, नाउ रिमेनिंग 5,000 क्या करने वाला उसको? 3,000 क्लॉथ के लिए, और हर अदर महीने ड्रेस के लिए 3,000, मतलब नए नए हर कपड़े महीने, पहन। हर महीने नए नए कपड़े, ओके। यस 3,000 ड्रेस, ओके। 8,000, 2,000 में क्या? और सर 2,000 सेविंग के लिए। सेविंग, ओके। देन हो गया यस सर। 10,000। नाउ मैंने 10,000 दिया, आपने 80% स्पेंड किया, 20% सेव कर रहा है, करेक्ट?
Yes or no? Yes, sir. See, you didn't plan. I was just asking casually. आपने casually बोल दिया, but within that itself you could see that 80-20 automatically हो रहा है. देखा है क्या? सर So उसी के लिए बोला था, हाँ हाँ. उसी के लिए कहा था, वही 80-20 रूल के लिए. Okay. Understand, but still, if you manage to do 20% saving, that is good, right? If you manage that way, you are good. Now, this is this the functionality wise. Any application, any software लेते हैं एक automobile. So different industries, automobile, right? Textile, hospitals, education, educational institutes, right? Yeah, grocery stores, or transport company, cab company. If you take anything like this, right, or food processing company, you take any of these organizations within the same sector, within the same textile sector, whether it is uh, doing in cotton or in silk or in wool, process will be almost same except a few things. Hospitals be inpatient, outpatient, surgery, surgical theater, surgical instruments, insurance claims, emergency, all these things will be same across the world. So इसीलिए इन लोग ने क्या कर दिया, first make a product with 80% of common features. वो कंपनी के लिए क्या चाहिए, उसको फर्स्ट क्रिएट एज अ सॉफ्टवेयर. उसको चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है, वो सब फीचर्स चेंज करने के लिए. रिमेनिंग 20% प्रोग्राम स्पेशली फॉर द क्लाइंट. इसका नाम कस्टमाइजेशन. कस्टमाइजेशन मतलब मुझे एक फीचर चाहिए, मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे ये फीचर नहीं चाहिए, ये सब कस्टमाइजेशन है. सो इट इज लाइक you buy a shirt, ready-made shirt, buy ready-made shirt या पैंट, alter it. हम लोग alteration करते हैं ना. You buy 42 inches, then alter it to 41 inches because 41 inches में नहीं मिलता है, 40 या 42, 38 ऐसे in even numbers only मिलता है. So, whereas your measurement is 41, so you buy a 42 inch and then alter it. You buy a pant, pants length alter कर सकता है, pant hip size alter कर सकता है. True. So ये सब ERP or ready-made software. ERP software is also called packaged software. ये तो ready-made software. After you buy that ERP, then उसमें we can do alteration. That is called customization. Maximum revenue are earned by Oracle, SAP, Microsoft ERP, right? Is this clear? Is this concept clear before I made? Okay. Good. Now I just want to stop my screen share. मैंने सूरत से मेरी कैरियर शुरू किया. I started in 1992. 1992 में अप्रैल में मेरा फाइनल ईयर एग्जाम्स खत्म हुआ. Then 1992 में I joined SR गुजरात. ESSAR पता है ना, SR गुजरात.
सूरत में ज्वाइन किया. I went to सूरत. In सूरत SR ने एकदम बड़ा स्टील फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा था उस समय. In 1992 itself, वो फैक्ट्री की बजट 3000 crores था. स्टील 2 प्लांट 3000 crores in 1992. आज it should be around 10,000 or 15,000 crores. Okay, right? So it is like एकदम some 4 square kilometer plant था, steel plant था. It was one of the revolutions in India at that point of time. Such a big budget project. I had a chance to work there as a software engineer. That time I learned ERP in Surat way back in 1992. आज तक वो ERP में क्या क्या स्क्रीन्स होते हैं, क्या क्या डेटाबेस टेबल्स होते हैं, ये सब मुझे याद है. Because the concept of ERP for a manufacturing company or for a factory doesn't change from place to place. स्टील फैक्ट्री मद्रास में या सूरत में या जर्मनी में फंक्शनैलिटी सेम है. एंड इट हैज नॉट मच चेंज. टेक्नोलॉजी चेंज्ड लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं हुआ. डिपॉजिट या विथड्रॉल या चेक देना या डिमांड ड्राफ्ट लेना, डीडी लेना, ये सब 1960 से आज तक सेम प्रोसेस, कुछ चेंज नहीं है. लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गया. बैंक्स में पहले आई थिंक 1960s में कंप्यूटर नहीं था, फुल्ली पेपर. 90s के बाद कंप्यूटर आया था. लेकिन आज कंप्यूटर और मोबाइल दोनों चल रहा है. प्रोसेस चेंज नहीं हुआ लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुआ. सो इसीलिए whatever you learn in ERP, every tester must know ERP. Once you know ERP features, ERP में क्या हो रहा है आपको समझ में आया तो you can manage testing very very easily. This is a fundamental rule. इसको हम लोग ने डोमेन या इंडस्ट्री बोलते हैं. डोमेन या इंडस्ट्री नॉलेज, we call it as domain या industry knowledge. Testers must know ERP. This is also very important. Is this clear? Any second thoughts or any doubts up to this portion? नहीं है तो please raise your hands. Good. 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 Now I am going to show a screen. और एक application है. Okay. एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ये स्क्रीन को URL पे भी I will be sharing with you. Okay. This is the URL. Chat में भेज रहा हूँ. Okay. Admin sub smaller letters. User ID is admin. Password is also admin. Okay. Admin टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ. तो ये छोटा वाला मिनी ERP है, बट समझने के लिए ये काफी है. ERP में क्या होते हैं करके to understand you can use just this. First thing, remember these three: lookups, masters, transactions. Lookup, master and transaction. Let me just copy this. Lookups, masters, transaction.
Remember these three. This is extremely important. The same concept will be there everywhere. Lookups मतलब हम लोग ने ऑप्शंस देखते हैं ना, रेलवेज रिजर्वेशन में सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या सेकंड एसी या फर्स्ट एसी, वो लिस्ट बॉक्स में वेरी लिमिटेड आइटम्स, 5 या 10 मैक्सिमम आइटम्स, राइट? या स्टेट्स, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, एक लिस्ट बॉक्स में स्टेट्स होता है, और ऑप्शंस रेडियो बटन में भी होता है, मेल फीमेल जेंडर, सीटिंग और स्लीपर, ऑप्शंस रेडियो बटन भी होता है, कभी कभी 3-4 रेडियो बटन्स भी होते हैं, राइट? Wherever you just choose some value, हम लोग टाइप करने के बिना सेलेक्ट करते हैं, वो भी लिमिटेड है, एकदम 1 करोड़ सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, 1,000 सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, लिमिटेड, मे बी मैक्सिमम 100 या 15 या 20, समथिंग लाइक दैट. It should not be high. That is called lookup. Usually lookups will be list box या radio button options, limited in number, very limited in number. For example, let us take currency. ERP में currency होना चाहिए. Currency मतलब USD is US dollars, Australian dollars, Singapore dollars, right? Then franc, right? French currency. You can say what is the currency code? INR matlab Indian rupees, right? Like that, you will have lot of things like that. What other currency you think? INR, USD, Australian dollar, Singapore dollar. What else you can think? Euros, correct. Euros, okay. For Europe. Just one name or a code or a description, that's it. For lookup, you will have only these two, nothing else. And these are all pretty standard. What other currency that we can think? Right? Japan yen, right? Japanese yen, Chinese yen. So there will be a code. Everywhere there will be a code, currency code. These will never change. Almost most of the time, the values will not change. ये change नहीं होता. State GST, ऐसा, these are all lookup codes, मतलब very limited values. And if I, after login, if I could click back to main page, it will come back here. Tax code, yeah, roles. Item category, agar you are in a manufacturing company, let us say automobile company, बहुत सारे items है, right? Within glass itself, बहुत सारे. Within Viper itself, you have, within tires, there are different companies. For example, I have a tires, tires. Item category matlab, soap is a category, shampoo is a category, detergent is a category, washing machine liquid is a category, washing powder is a category. Each one is a category. Within that, soap में हमाम वो सब model है या brand है. Within that category, you have multiple models. So वो categories, that is also a lookup. Tires, brakes, anti-lock brakes. Okay. Then light, headlights. Because Ashok Leyland manufactures multiple types of trucks, bigger ones, very big ones, cargo ones, छोटा वाला trucks. So वो सब के लिए
अलग अलग लाइट होती है. So they will have multiple types of headlights, but वो सब लाइट के अंदर आ जाते हैं. That is called category, item category. फार्मेसी, अगर आप फार्मेसी गए तो फार्मेसी में क्या क्या ड्रग टाइप्स होता है और मेडिसिन टाइप्स होता है? कैन यू टेल मी समथिंग? फार्मेसी में क्या क्या मेडिसिन टाइप? एंटीबायोटिक्स, यस करेक्ट, वो तो एक आइटम कैटेगरी है, करेक्ट. और मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स, फंगल ड्रग्स, analgesics, correct. Then antipyretic, फंगल ड्रग्स, correct. Fungal, antifungal, antibacterial, right? Digestic, painkillers, correct. Tranquilizers, antacids. Then पैरासीटामॉल ये टाइप नहीं है, पैरासीटामॉल एक ड्रग का नाम है, वो पेन किलर के अंदर आती है. वो एंटीसेप्टिक, करेक्ट. ऑइंटमेंट्स, लोशंस, टॉनिक्स, child medicine, that itself is a category, correct. Sanitizers, very good. Plasters, right. Wound ointments, disinfectants, very good, excellent. ये सब कैटेगरीज है. बैंडेजेस, ये सब कैटेगरी है. बैंडेजेस में बैंडेड और 2-3 मॉडल हो सकता है. हैंड वॉश, करेक्ट. माउथ फ्रेशनर्स, आई मेडिसिन, ईयर मेडिसिन, पेन रिलीवर्स, जेल्स, excellent. Like this, when we see in a choti pharmacy itself, we see so many categories. एकदम 4 square kilometer plant में कितने items category हो सकता है? Imagine that. This is called, first thing is called item category. This is called lookup. Something like this. For example, accounts department के लिए और से HR के लिए roles चाहिए. Roles मतलब ये क्या करने वाला, हम लोग ने डिस्कस किया ना. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट MGR, राइट. प्रोजेक्ट मैनेजर वो एक रोल है. टेक्निकल लीड है, टेक्नोलॉजी लीड. देन आई कैन से क्वालिटी एश्योरेंस लीड. दैट्स अ रोल. This needs 10 characters, okay, इसीलिए वो बोल रहा है. QA lead. Then I can always say welders, welding labor, okay. Carpenter, plumber, electrician, high voltage electrician, cleaners. All these things are roles. वो क्या कर रहा है, हम लोग ने उस दिन देखा सॉफ्टवेयर में क्या क्या रोल था. इसमें मैन्युफैक्चर में भी बहुत लोग, फॉर एग्जांपल HR के लिए एक मैनेजर चाहिए, अकाउंट्स के लिए एक मैनेजर चाहिए, अकाउंट के लिए VP चाहिए, अकाउंट्स के लिए CFO को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चाहिए. ये सब रोल्स है. अगेन दीज रोल्स आर वेरी लिमिटेड. इन अ कंपनी में कितने रोल सकता है? मैक्सिमम 40-50 रोल सकता है. इसमें इससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम इतना ही होगा. So wherever you see limited items, वो लिस्ट बॉक्स या रेडियो बटन ऑप्शंस में दिखा दे रहा है, एंड वो चेंज नहीं होती है, that item is called lookup. Is this clear? Is this clear? Good. Yes, sir. आपके कॉलेज में क्या क्या फीस टाइप होते हैं? क्या क्या फीस टाइप्स देख लिया आपने? कैन यू लिस्ट? लैब फीस, लैब फीस, एग्जाम फीस, एग्जाम फीस, Courses fees, लाइब्रेरी फीस,
hostel, practical fees, tuition fees, registration fees, correct? Registration fees or जनरेटर फी, generator fees, okay? इलेक्ट्रिसिटी फीस, Electricity fees, electricity इसलिए अलग fees collect करता है क्या कॉलेज में और ट्यूशन में? लैब फीस ओके होता है, हॉस्टल फीस, मेस बिल फीस होता है, रूम चार्ज होता है, और कैंटीन फीस, कैंटीन, कॉलेज डेवलपमेंट फीस, करेक्ट? और क्या? अगर अटेंडेंस कम हो गया तो एक फीस मेडिकल देना फीस, पड़ेगा ना? मेडिकल, फाइन, पेनल्टी भी फीस है, राइट? सर तो फी लेट होने पे भी पेनाल्टी देनी पड़ती है। हाँ करेक्ट, लेट चार्जेस, एनुअल चार्जेस, वो सब तो ये सब कितने वैरायटीज है? हम लोग ने 10 या 15 गिन गिन के हम लोग, राइट? दैट्स इट। सो ये सब सब कॉलेजेस में ये फीस ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होता है। फीस का वैल्यू चेंज है, अलग अलग है, लेकिन लैब फीस, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, लाइब्रेरी फीस हर कॉलेज में यही टाइप होता है। दीज आर ऑल लुकअप्स, करेक्ट? मेरे यस सर। लैपटॉप काम नहीं करता है, ठीक से I don't know what is the problem in your laptop, so I don't know. I think Vipin Ebu asking laptop नहीं काम कर रहा है. Okay, please give it to some technician, they will help you. So these are all called lookups. And building types: academic building, library building, arts and culture building, right? प्रशासनिक बिल्डिंग, library building, hospital. So building का type भी limited, नहीं कि maximum 10 या 15 maximum, that is fees counter, correct? ये सब building types है। हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में क्या क्या टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दे सकता है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है हॉस्पिटल में? एक लाइक जैसे अपोलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं? फर्स्ट एड, क्या सर ट्रामा सेंटर्स होंगे, ओपीडीज होंगे, ओपीडीज, ट्रामा सेंटर और मेडिकल स्टोर्स होंगे, स्टोर्स, देन और सर हर डॉक्टर के चैम्बर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। डेंटल, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जैसे तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है? ऑन्कोलॉजी, डेंटल, आईसीयू, स्टाफ रेस्टिंग रूम, और क्या? इमरजेंसी रूम होंगे। emergency, reception, cardiology, neurology, nephrology, then यस general सर, ward, then keep going. डेंटिस्ट, Dentist is a person, dental is a department, orthopedics, काउंसलिंग एरिया होगा। counseling, physiotherapy, labs, x-ray labs, blood collection labs, ultrasonic labs, CT scan labs, correct? Immunology, gynecology, correct? और dietary, correct? ये सब डोनेशन, एंडोक्रिनोलॉजी, करेक्ट? ये सब डिपार्टमेंट्स है। मैक्सिमम कितने डिपार्टमेंट्स हो सकता है इन हॉस्पिटल? मैक्सिमम 20 या 25, इफ इट इज अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मे बी 25 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। 25 के ऊपर आई डोंट सी एनी big hospital having any departments. Even very big government hospitals like AIIMS will not have more than 25 departments. ये सब ये डिपार्टमेंट का नाम है, ये सब if you put maximum 25 या 30 or 40 whatever, but it is not big, and ये नाम चेंज ही नहीं हो सकता है। These are all called lookup values. Now have you understood the first concept of ERP and the lookups? Is this clear?